Hello? I said it once happened. No, that's not what you need. When post-midnight, if I'm telling you a story, if I say once upon a time, you say, uh-huh. Hello? It once happened. There was a farmer. And this farmer was a devotee of Shiva, and he was worshipping that form of Shiva which is referred to as Bholenath, that means the innocent one, the childlike one. One day, he had a bad crop. Then he called Shiva intensely. Because Shiva was Bholenath, he appeared. And he said, Shiva, this is not good. You know nothing about farming, but you manage the rain, you manage the sunlight, and I get a bad crop. These are not your business. If you leave it in my hands, I will do it well and I will be an excellent farmer. Shiva being Bholenath, he said, all right, you manage the sunlight, you manage the rain, you manage everything. So, the farmer, the next crop, he plowed his land, put the seed and said, rain. 10 minutes, the soil got wet, stopped. Sunlight came. Too much sunlight, reduced. You know the remote switch? Like that he managed. And this crop of maize came up very well, really green and thick. He was very happy and all the cobs came up. As it is the tradition among farmers who raise maize or corn, they'll go one day when it's all grown, open and see how the grain has formed. He went, ripped it open and saw the cobs were all solid, the plants were standing bigger than ever, but within the cob there was no grain. Then again angrily he called Shiva. Shiva being Bholenath, he appeared. Then he said, what have you done? There is no grain, there's only cob, there is no grain. What have you done, Shiva? Shiva said, what have I done? I gave everything in your hands. Well, it rained on time, sunlight came on time, everything happened, the plants grew well, but why there is no maize? Why there is no grain at all? Then Shiva said, if I can say something, I would have not only brought rain, I would have made the land go dry a little bit so that the roots will search a little deeper. Then I would have put some stress on the plant by blowing wind. Then the plant would root very well and because of that, the grain would form. But now, you treated this whole crop like your pet and it's looking pretty, but there is no grain, what can I do? So, we've been doing this like this, our farming has become like this. Slowly, we have everything except nourishment. Nourishment values in the world have dropped significantly, and for this, humanity and every other life
is paying a heavy price. Shiva is also known as the Pashupati, which means he is the Lord of all living creatures. Within the soil and above the soil, all creatures are his. He is also known as Bhuteshwara, that means he is the Lord of the 5 elements. It is between the 5 elements, the organisms, the worms, insects, plants, trees, animals and human beings. The cycle of life happens. If you break any one link of this chain, the chain will fall apart, the entire chain. Any chain is only strong as its individual link. Right now, this is what we have done in our ignorance, that we are almost breaking the chain. Not the entire chain, just one link, but if you break one link that is good enough, the chain falls apart. So, it is time we understand that the elements of earth, water, air, fire and space and every organism and life that exists here has a role in the making of who we are. Who we are is a reflection of the life that's happening within the soil. Even in terms of evolution, who we are is a consequence of what is beneath the soil. Time to pay attention to that. இப்படி ஒரு முறை நடந்தது. ஒரு விவசாயி एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ, एक किसान था। ये किसान शिव का भक्त था। वो शिव के उस रूप की पूजा करता था जिसे भोलेनाथ कहते हैं, जो कि भोले भाले हैं, बच्चे जैसे हैं। एक दिन उस किसान की फसल खराब हो गई। उसने शिव को पुकारा। शिव एक भोलेनाथ थे, वो प्रकट हो गए। किसान ने कहा, शिव ये ठीक नहीं है, आपको खेती के बारे में कुछ नहीं पता, आप किसान नहीं हैं, लेकिन आप बारिश का कंट्रोल करते हैं, आप धूप को कंट्रोल करते हैं। देखिए मेरी फसल खराब हो गई, ये आपका काम नहीं है, ये आप मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए, बारिश धूप ये मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। शिव तो भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप ही सारी चीज़ें मैनेज कीजिए। किसान ने अपनी अगली फसल लगाई। उसने खेत को जोता, खेत में बीज बोए। फिर उसने कहा बारिश। 10 मिनट तक खूब बारिश हुई। फिर उसने हाथ लगा के देखा, मिट्टी गीली थी। फिर उसने कहा रुक जाओ, बारिश रुक गई। फिर उसने कहा धूप चाहिए। धूप आ गई। नहीं, धूप बहुत तेज़ है, थोड़ी धीमी हो जाओ, थोड़ी धीमी हो जाओ। धूप थोड़ी धीमी हो गई। इस तरह से उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया और उसकी फसल बहुत अच्छी उगी। ये मक्के की फसल थी, भुट्टे की फसल थी, बहुत अच्छी, लंबे लंबे पौधे, एकदम हरी भरी फसल उगी। उसमें बहुत सारे भुट्टे लगे थे। किसानों की ये परंपरा है कि जब भी भुट्टे लगते हैं वो उसके बाहर का खोल कर देखते हैं कि अंदर दाने कैसे हैं। लेकिन किसान ने पाया कि भुट्टे तो बहुत सारे लगे थे, लेकिन उसमें अंदर दाने नहीं थे, उसमें अंदर बीज नहीं थे। वो किसान बहुत गुस्सा हो गया और उसने फिर से शिव को पुकारा। भोलेनाथ फिर से प्रकट हो गए। किसान ने कहा आपने क्या किया है, इसमें बीज नहीं है, भुट्टे तो बहुत लगे हैं लेकिन बीज नहीं है। शिव ने कहा भाई मैंने क्या किया है, सब कुछ तो आपके हाथ में था, आप समय पे बारिश लेके आए, समय पर आपने धूप लगाई। किसान ने कहा लेकिन फिर बीज क्यों नहीं आए। शिव ने कहा क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं सिर्फ बारिश ही नहीं लाता, मैं थोड़ा सूखा भी लाता, ताकि पानी की तलाश में पौधा अपनी जड़ों को और गहरी लेके जाता। मैं पौधे के लिए चुनौती पैदा करता, बहुत तेज़ हवाएं चला के, फिर वो मजबूत हो जाता और अच्छे से बढ़ता। लेकिन और वो जब अच्छे से बढ़ता तो उसमें बीज भी आते। लेकिन अभी आपने अपनी फसल को एक पालतू जानवर की तरह पाला है। अभी आपकी फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें बीज नहीं है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
हमारी खेती ऐसी ही हो गई है। हम जो भोजन उगाते हैं उसमें पोषण बहुत ज़्यादा कम हो गया है और हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, पूरी मानवता इसकी कीमत चुका रही है। शिव का एक नाम है पशुपति, यानी कि वो सभी जीवित प्राणियों के स्वामी हैं। सभी जीवित प्राणी जो मिट्टी के नीचे रहते हैं और मिट्टी के ऊपर रहते हैं, वे सारे प्राणी उनके हैं। शिव को भूतेश्वर भी कहा जाता है, यानी कि वो 5 तत्वों के स्वामी भी हैं। इन 5 तत्वों के बीच पेड़ पौधों जंतु इंसानों के बीच एक चक्र चलता है। अगर आप इस चक्र की एक भी कड़ी निकाल दें तो ये चेन टूट जाएगी। Our lives. I'm essentially talking about being able to live without concern, being able to live without fear and anxiety as to what will happen with your life. To be able to live life in some sense of abandon, what is most needed is stability, balance within yourself. When I say stability, well, you can think of a mountain or a rock, that is also stability. But stillness is the ultimate stability. If you become absolutely still at the core of who you are, or in other words, if you touch the core of who you are, you will naturally be still. In this stillness, there is absolute sense of stability. Once you're rooted in this stability of stillness, then you can play your life with absolute exuberance and abandon. You can love, laugh and live strongly without any sense of what about me, because when your foundations are rooted in stillness, there shall be no such concern. MahaShivRatri is that possibility that you're looking for on this night, that you want to touch that core within you, which is stillness. வாழ்வில் ஒரு விதமான ஆளுமை வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு என்ன ஆகுமோ என்கிற கவலை இல்லாமல், அச்சம் இல்லாமல், பதட்டம் இல்லாமல் अगर जीवन में थोड़ी महारत हो, महारत यानी कि आपको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा। अगर आप थोड़ी बेफिक्री के साथ जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन होनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ स्थिरता, तो आप पर्वत या चट्टान के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन परम स्थिरता है निश्चलता, स्टिलनेस। अगर आप अपने अंतरतम को छू लेते हैं तो वो पूरी तरह से निश्चल है। जब आप उसे छू लेते हैं, अब आप अपने जीवन को पूरे उल्लास और बेफिक्री के साथ जी सकते हैं। आप प्यार कर सकते हैं, हंस सकते हैं, इस चिंता के बिना कि मेरा क्या होगा। आज आप यहाँ महाशिवरात्रि की रात में हैं, ये वो संभावना है। इस रात आप उस अंतरतम को छूना चाहते हैं जो कि निश्चलता है। जब आप उसे छूते हैं, केवल तभी आप बेफिक्री के साथ जी सकते हैं, इस चिंता के बिना कि मेरा क्या होगा। Considering the time, we will just handle 1 or 2 questions and then go into meditation. So in the next 10 minutes, all of you who are moving, if you can come and sit back, we could go through our meditative process. So these 10 to 15 minutes, let's handle a couple of questions.